कहाँ पैसा डालें। स्लो डाउन इसलिए हुआ बिकॉज मार्जिन एक्सपेंड होने बंद हो गए, बाजार डाउन है और दुनिया के बाजार तेजी में है। करेक्ट, ऐसा क्यों हो रहा है? या दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन अजय। खुद ही एक्चुअली बहुत चकित थे कि इतना साथ चल रहा है इतने सालों से, और जितनी अनसर्टेनिटी आज है बाजारों में। नमस्कार दोस्तों, हमारे घनिष्ठ मित्र प्रतीक पारेख आज हमारे साथ फिर से हैं। एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काम करते हैं, आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं, और जैसा पिछले 2 पॉडकास्ट में आपने इन्हें देखा है, मार्केट साइकिल की एनालिसिस जितनी पुख्ता प्रतीक ने की है बहुत कम लोगों ने की है। और जितनी अनसर्टेनिटी आज है बाजारों में, टैरिफ को लेके, अर्निंग्स ग्रोथ डाउनग्रेड्स को लेके, जीएसटी कट को लेके, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि मैं बॉम्बे आया हुआ हूं, प्रतीक जी यही हैं तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मुझे लग रहा है सबके दिमाग में है कि ऑलमोस्ट 5.5-6 लाख करोड़ का फ्लो आया है इंडिया के बाजारों में, डोमेस्टिक फ्लोज कम से कम पिछले 1 साल, लेकिन बाजार डाउन है। करेक्ट, और दुनिया के बाजार तेजी में है। करेक्ट, ऐसा क्यों हो रहा है? या दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन अजय। और ऑनेस्टली दिस इज अ क्वेश्चन दैट एवरीबडी शुड आंसर, दोज हु से कि जब तक फ्लोज अच्छे हैं मार्केट ऊपर जाएगी। बिल्कुल सो इसमें 2-3 पहलू है या कारण है जी। सो अगर आप देखोगे प्री कोविड 20 साल तक इंडिया हैज मिमिक ग्लोबल ट्रेंड्स टू द टी। ठीक है, मतलब डायरेक्शनली इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स दोनों अप साथ में जाते हैं, डाउन भी साथ में साथ आते में हैं। जाते हैं, वो आपने चार्ट Now, भी दिखाया था। हाँ, but obviously there are the magnitude of up and down differs, and even sectoral themes also जो emerging markets में चलती है वही इंडिया में चलती है। बिल्कुल But post COVID and more specifically last 3 साल में these trends have got somewhat broken. अच्छा Now one of the reasons, again difficult to be precise, but one of the reasons I feel is because of COVID led lockdown unlocking. कि उसके कारण क्या हुआ है कि हर कंट्री, हर सेक्टर की एक अपनी अलग ही साइकिल है। ठीक है, सो लास्ट 3 साल में अगर आप देखोगे इंडिया की अर्निंग्स या बिजनेस साइकिल, उसका गुड प्रॉक्सीज क्रेडिट ग्रोथ, और ग्लोबल बिजनेस साइकिल, उसका गुड प्रॉक्सीज इंडियाज एक्सपोर्ट्स, वो दोनों डाइवर्ज हुए हैं। अच्छा मतलब एक्सपोर्ट्स जो है 2022 के मिड से ही स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गया था जैसे फेड ने रेज किए। बट इंडिया में एग्जैक्टली उल्टा हुआ कि बिकॉज अनलॉकिंग इंडिया में लेट हुई, बैलेंस शीट सब अच्छी थी, तो 2022-23 इनफैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ 24 तक भी क्रेडिट ग्रोथ वाज वेरी गुड, वाज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम 7-8 टू 14-15। लास्ट 1 ईयर में क्या हुआ है कि ग्लोबली एक्सपोर्ट्स हैव स्टेबलाइज्ड, ठीक है, बट इंडिया क्रेडिट हैज स्लोड डाउन, which has led to earnings weakness. So मेरे हिसाब से both on the way up and on the way down, it is India specific earnings which have dominated the narrative and the market dynamics. Now coming to your आपका दूसरा पॉइंट कि कुछ भी हो जाए फ्लोज तो बहुत अच्छे ही है, उनको मार्केट के ऊपर लेके जाना चाहिए था। वो तो पूरी थिंकिंग है कि यार रोज 1.5 से 2,000 करोड़ आ रहा है अक्रॉस करेक्ट, ईपीएफओ, रिटेल, म्यूचुअल फंड, बाजार क्यों नहीं चल रहा क्यों है? नहीं चल रहा है, करेक्ट। सो मेरे हिसाब से फ्लोज आर एन आउटकम ऑफ फंडामेंटल्स, या and also they shape fundamentals to an extent. But I think one of the reasons why last 1-1.5 में especially, domestic flows have been insufficient to lift market higher is क्योंकि सामने सप्लाई भी बहुत आई है। बिल्कुल प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी एंड फ्रेश इशुएंस, तीनों मिला के मंथली रन रेट लास्ट 1 साल में इज अराउंड रफली $6 to $7 billion a month। ये बहुत ज्यादा सप्लाई है। नाउ आप पूछ सकते हो कि ये सप्लाई क्यों आ रही है। हमारे हिसाब से दिस सप्लाई इज एन आउटकम ऑफ द वैल्यूएशन ग्रोथ डाइकोटॉमी। कि चीजें महंगी हैं, ग्रोथ है नहीं, तो प्रमोटर अपना माल भी बेच रहा है। एग्जैक्टली, और फ्लोज स्ट्रांग है तो वो ऑब्जॉर्व कर पा रहे हैं। अब्जॉर्ब भी कर पा रहा है, बिल्कुल। सो दैट्स वेयर फ्रॉम ईयर ऑन हमारे हिसाब से ग्लोबल आउटलुक बिकम्स वेरी क्रिटिकल। बिकॉज अगर आप देखोगे अर्निंग्स में क्रेडिट ग्रोथ जो नीचे आके अभी 3-4 महीने से 10% पे स्टेबलाइज हो गया है। Second is on flows as well. FII flows have now become will be the marginal price setter. इंटरेस्टिंग। Because आप देखोगे सितंबर 24 से FII सेलिंग स्टार्ट हुआ, यस, तब से ही मार्केट का पीक और नीचे आ गया yes, है, yes. राइट। बिकॉज जो डोमेस्टिक सप्लाई और फ्लोज का जो गैप है इज बीइंग फिल्ड बाय FIIs. And third is also on the global front, like our divergence from valuation perspective to EMs has now normalized. मतलब in 2023 and 2024 जब हमने बहुत आउटपरफॉर्म किया, our valuation premium to EM जो लॉन्ग टर्म एवरेज इज रफली 50-55%,
reached all the way high up till 80%. Correct. And last 1 years of underperformance has led to valuation premium relative to EM now being normalized to long-term average. Okay. So जो excessive froth अब बोलो या performance बोलो जो भी है, that has now normalized, and I think we are going back to that pre-COVID era where global will shape the outlook, potentially both on earnings as well as flows year on Ajay हमारे हिसाब से. बट ये फ्लोज वाली बात एक्चुअली आपने बहुत अच्छी करी. मैं भी एक किसी से वार्तालाप हो रहा था तो मैंने भी वही कहा. मैंने तो एक मेटाफर दिया कि यार जितना शहद फेंकोगे उतनी मक्खियां आएंगी. ये सही सही अच्छा. एज मच हनी यू गिव दैट मेनी फ्लाइज विल कम. करेक्ट. एंड आप इतना सही कह रहे हैं कि हमने तो एक पूरी एनालिसिस भी करी थी कि कितना प्रोमोटर ने माल बेचा है. करेक्ट. कितना प्राइवेट इक्विटी ने बेचा है, कितना फ्रेश इक्विटी हुआ है. और देखो जो भी मैंने आज 25-30 साल में देखा है, प्रोमोटर जो होता है ना स्मार्टेस्ट है. या आई एग्री विद यू. इफ एंटरप्रेन्योर इज सेलिंग हिज स्टॉक, जिसको वो एकदम पकड़ के रखता है, राइट, ही इज सेलिंग. करेक्ट. उसको लग रहा है महंगा हो गया है. करेक्ट. राइट. बट चूंकि डोमेस्टिक फ्लो बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं तो ऑब्जॉर्व किए जा रहे हैं. करेक्ट. लेकिन एज वही जितना आप शहद सही बात उतनी मक्खियां. लेकिन फिर ये जो अब कपिल से बात हुई थी, करेक्ट, ठीक है, टैरिफ को लेके, ग्लोबल ट्रेड को लेके, ट्रेड डेफिसिट्स को लेके, तो उसका एक डेरिवेटिव सवाल आपसे है. ट्रेड डेफिसिट वर्सेस ग्लोबल ग्रोथ वर्सेस इंडिया, हाउ डू यू थिंक ऑफ दैट? या अगेन अजय, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो जैसे आपने कपिल के साथ डिस्कस किया होगा कि टैरिफ्स का, बायलैटरल टैरिफ्स आर उसका इम्पैक्ट होता है, फर्क पड़ता है कॉम्पिटिटिवनेस, बट इट्स अ वेरी स्मॉल इम्पैक्ट. ओके. जो बड़ा इम्पैक्ट है इज कि यूएस के ओवरऑल इंपोर्ट्स कूलिंग ऑफ एंड ट्रेड डेफिसिट नैरोइंग, विच इन टर्न लीड्स टू ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन. और इस बार उसका इम्पैक्ट इज इवन हायर वर्सेस इन द पास्ट बिकॉज पोस्ट कोविड यूएस अलोन has been the engine of growth. Absolutely. Right. Absolutely. It has almost single-handedly carried the world, and absorbed China's excess surpluses. Yes. So, अभी अगर यूएस का दरवाजा बंद होता है तो चाइना के पास तो कैपेसिटी है ही एक्स्ट्रा, और थोड़ा बहुत सा कैपेसिटी कट कर भी ले वो, जैसे भी वो नया नैरेटिव चल रहा है एंटी इन्वोल्यूशन का, बट दे आर 13% of world's consumption and 28% of world's manufacturing. The capacity cuts can only take you so far. Somebody else has to absorb that. जिसका शायद eventually solution आएगा, if things worsen. But in the meanwhile, you could have a vacuum कि US का import slow हो गया, but कोई और absorb नहीं कर रहा है, तो global trade slow हो जाता है. And that is the main channel to focus on in my view, Ajay. See, people बहुत ज्यादा फोकस है कि कौन से सेक्टर को बायलैटरल इम्पैक्ट होगा. इवन यूएस टैरिफ से मतलब इज देयर $70-80 billion गुड्स एक्सपोर्ट्स, प्रॉब्ली 2-2.5% ऑफ जीडीपी, उसका कुछ रीरूट भी हो जाएगा. तो आई मीन द नेट कंक्लूजन डायरेक्टली अगर आप नंबर्स करोगे तो बहुत छोटा है. बिल्कुल. राइट. बट द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इज वेरी लार्ज, एंड फॉर अर्निंग्स पर्सपेक्टिव इट इज इवन मोर क्रिटिकल टुडे. क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पोस्ट कोविड जो अर्निंग्स रिकवरी आई है इंडिया इंक की, वो डिमांड से इतनी ज्यादा नहीं आई है. ठीक है. ज्यादा रिकवरी आई है मार्जिन से. अभी मार्जिन क्या है, आई शो दैट चार्ट अगेन. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बट अभी मार्जिन क्या टू द ब्रिम है, यहाँ से अभी एक्सपैंड होना बंद कर दिया है. इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर का स्लो डाउन इसलिए हुआ बिकॉज मार्जिन एक्सपैंड होने बंद हो गए. तो वो तो मुझे याद है आपका बहुत ही बढ़िया चार्ट था जहां आपने सारे सेक्टर्स का दिखाया था कि मार्जिन रेंज और सब कुछ टॉप ऑफ द रेंज. ब्यूटीफुल चार्ट. करेक्ट. तो अभी आप कह रहे हैं कि वो ऊपर की मार्जिन गिरनी भी शुरू हो गई है. हाँ करेक्ट. सो टॉप लाइन हैज बिकम द की ड्राइविंग फोर्स फॉर इंडियन इक्विटीज ऑफ सॉर्ट्स. अब टॉप लाइन में क्या है, पीपल फील कि इंडिया का तो सारा डोमेस्टिक डिमांड ही चलता है, बट ये हमारे हिसाब से एक इज एन इनकम्प्लीट पिक्चर. तो हमने ये थोड़ा गणित करके देखा, हमारे हिसाब से 2/3 ऑफ द सेक्टर्स ऑफ बीएसई फाइनेंस कंपनीज टॉप लाइन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल ट्रेड. वाओ. मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, व्हिच विल हेल्प क्लियर. इज लाइक टाइल सेक्टर, लाइक कजारिया, सोमानी या ऑल जो भी कंपनीज है. नाउ उनका डायरेक्ट एक्सपोजर टू यूएस
बहुत कम है. Yes. मतलब they or direct exposure to exports is also very small. But their entire marginal price and marginal demand is set by export demand. Because Morbi has very large capacity set up for exports. ठीक है. And if exports don't fire, तो ये domestic में divert करते हैं. हाँ वो डंप करेंगे फिर यहाँ. Yes. Interesting. Yeah, And yeah. उससे उनकी पूरी प्राइसिंग और ये वो गिरा देते हैं. तो इसीलिए जब आप ट्रेड का एनालिसिस कर रहे हो, आप कितना एक्सपोर्ट करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता. मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो मार्जिनल प्राइस कौन सेट कर रहा है. यस यस यस. कि वो एक्सपोर्ट डिमांड मार्जिनल प्राइस सेट कर रहा है या डोमेस्टिक डिमांड. एंड इंडिया के केस में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट डिमांड सेट द प्राइस. तभी आप देखो कि हमने हमारे रिपोर्ट पे बहुत ही अच्छा एक चार्ट डाला है वेयर वी शो इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ और बीएसई फाइनेंस कंपनी टॉप लाइन. इट्स वन एंड द सेम. मतलब इन आना हम खुद ही एक्चुअली बहुत चकित थे कि इतना साथ चल रहा है इतने सालों से. एंड दिस इज द मेन लिंकेज दैट वी नीड टू फोकस ऑन कि आगे जाके जब ग्लोबल ट्रेड स्लो होगा सो द होल बीएसई 500 टॉप लाइन विल स्लो डाउन. सो वॉल्यूम ग्रोथ अगर कम होती है तो प्राइसिंग गिरेगी, वैल्यू ग्रोथ और कम हो जाएगी. मार्जिन ऑलरेडी पीक पे है अक्रॉस सेक्टर्स, मार्जिन गिरेगी. यस. सो देन यू कुड सी अ सीवियर अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल. या दैट्स अगेन it's quite likely. So earnings have been on the downgrades for the last 1 year already. And आगे जाके this earnings downgrades can further continue. अच्छा. Because Street is still building an acceleration in top line and more importantly margin expansion. Now obviously GST cuts और वो सब आए हैं तो कुछ offsets है. But I think the bigger story is global trade slowing down. That I think is going to be the biggest swing factor for India Inc.'s earnings and top line going ahead. But then tell me, ये जो पिछली 3 साइकिल्स थी 2008, 2010 से 12, 2019, तब भी ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हुआ था. एज एन इन्वेस्टर फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट बॉटम कहाँ हो रहा है? Yeah, that's again a good question, Ajay. But before that, I just want to explain, to the viewers कि ये जो 3 एपिसोड आपने बोले 2008, 9, 2010 से 12 और 2019, ये 3 बड़े यूएस ट्रेड डेफिसिट के नैरोइंग एपिसोड्स हैं. नाउ बिफोर आई से व्हेन मार्केट्स विल बॉटम, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि किस सेक्टर पे ज्यादा इंपैक्ट होता है. ठीक है. नाउ पॉपुलर परसेप्शन है कि द बिगेस्ट इंपैक्ट विल कम इन डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स. करेक्ट. सबको यही लगता है. हमें भी शायद यही लग रहा था. बट हमने जाके जब हिस्ट्री में देखी तो व्हाट वी रियलाइज इज आयरॉनिकली डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं भी करते हैं, दे हैव हैड अ बिगर स्लम्प इन प्रॉफिट्स कंपेयर्ड टू एक्सपोर्टर्स लाइक आईटी और फार्मा. वाओ. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल्स, बैंक्स, ऑटोज, even durables which are supposed to be very strong moats and consistent compounders, complete domestic market, they had a bigger slump in earnings than IT. And why is that? Yeah, now that's again, it's very important to know कि it's not a coincidence. There is a very strong correlation. The logic for that is that it goes back to my previous point कि जैसे हमने बोला कि 2/3 of BSE finance top line is export influenced. ठीक है. Now जैसे global trade slow होता है, BSE finance top line slows down. These guys cut cost and capex. ठीक है. तो उससे obviously domestic cyclical की डिमांड स्लो हो जाती है. उसके कारण बैंक्स की लोन ग्रोथ की डिमांड स्लो हो जाती है और बैंक्स भी डर जाते हैं, वो लेंडिंग कैंसिल करते हैं, एंड इन टर्न अगेन फोर्सेस बीएसई फाइनेंस टॉप लाइन स्लो डाउन. दिस इन सम सेंस इज अ विशियस साइकिल व्हिच कैन बी ओनली ब्रोकन बाय अ स्ट्रांग पॉलिसी रेस्पॉन्स. यस. राइट. नाउ पॉलिसी रेस्पॉन्स कैन बी बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल. ग्लोबली कोई क्यूई कर दे या लेट्स से फिस्कल स्टिमुलस दे दे. ठीक है. दैट्स अ ग्लोबल स्टिमुलस. Now, domestically, in isolation, can we stimulate? Answer technically is yes. But like any policy, there are costs. कि अगर आप isolation में stimulate करते हो, let's say hypothetically, अगर हम बड़ा fiscal expansion करते हैं, RBI cuts rates by let's say, by a meaningful amount. ठीक है. Then the cost of that policies will be in INR depreciation. INR, could be under pressure. Now, obviously, growth will get a push, but in the near term, you could have a pressure on INR.
And that's why आप देखोगे in all the past revival cycle they have global linked, because कोई भी पॉलिसी मेकर बहुत ज्यादा आईएमएफ में प्रेशर चाहेगा नहीं. तो जब तक ग्लोबल स्टिमुलस इन फुल स्पीड ना नहीं हो आता है. तब तक हम डोमेस्टिकली भी स्टिमुलेट नहीं कर पाते हैं. हम्म, हमारे थोड़े हाथ बंधे हुए हैं. हाथ बंधे हुए हैं. तभी आप देखो ये जीएसटी कट्स is very welcome. I actually think it's a stimulus. Yes, correct. Right? It does feel, at least in our pockets and in our aspirations and all those things. But the proof of a stimulus is कि actual aggregate fiscal deficit को क्या हो रहा है. हाँ. अगर वो fiscal expansion होता है by, and in the sense they fund GST cuts by doing more borrowing, then what you're saying is right, it's a stimulus. But if that is not the case, then it will certainly boost a pocket of demand like consumption. Yes. But it could potentially come at the expense of spending cuts somewhere else. And that's why, all these stimulus, whether it's consumption stimulus or capex spending, their multipliers are large if they are done in the backdrop of fiscal expansion. अगर आप फिजिकल कंसोलिडेशन के बैकड्रॉप में करते हो तो क्या जो हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो एक सेगमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉप अप होता है एंड दूसरे को कम होता है. एंड दैट्स वेयर आई थिंक when we are analyzing these macro impacts, it's important to take into account the overall macro policy. Now there are obviously sectoral implications of a policy tilt, but to know whether that policy is sufficient enough to revive the business cycle and turn around the business cycle, the aggregate impact needs to be seen. Okay. And I mean, obviously time will tell us that whether this was enough or not, but ex ante, if you go by the past and also the fact that borrowing is not going to increase materially, I mean, it seems difficult that will be enough to offset global headwinds. But nonetheless, it is a welcome move and will certainly be some counter to the very large global headwinds that we are facing. And the slowdown in consumption here. Yes. So प्रतीक, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा फ्लोज को लेके. इट ऑल स्टार्ट्स विद कि एफआई फ्लोज पिछले सितंबर से वो बेच रहे हैं. शुरू में हमें लगा था हम अब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स या रिटेल को एफआई फ्लो भी अब्जॉर्ब करना है, प्रोमोटर डिमांड भी अब्जॉर्ब करना है, प्राइवेट इक्विटी अब्जॉर्ब. करेक्ट. दिक्कत है. करेक्ट. फ्लोज के बारे में बताइए, क्या डायनामिक्स है? या करेक्ट. अगेन अजय, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर आर नो क्लियर आंसर्स ऑनेस्टली. सो बट आई स्टिल गिव इट अ शॉट. सो फ्लोज अगर आप देखोगे, वो दो और तीन चीजों से मूव करते हैं. ऑब्वियसली उसमें एक बड़ा मूवमेंट होता है डॉलर स्विंग्स, बिकॉज इट्स इमर्जिंग मार्केट. सेकेंड होता है इंटरेस्ट रेट्स या पॉलिसी, और थर्ड होता है आपकी खुद की कंट्री की अर्निंग्स डायनामिक्स. नाउ द थर्ड पार्ट वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड कि इंडिया का अर्निंग्स डाउन साइकिल इज स्टिल अहेड ऑफ अस, and it's not that down cycle is not going to be restricted just to global sectors, but potentially even be more broad based to even domestic cyclicals as well. So in a scenario where earning support is not there, then you either dollar should weaken further, into whatever potential policies that US implements, or we need to have support of interest rates. Now the dollar movement so far was happening because of tariffs, reversal, capital flight away from US. I mean, something first time we have seen in 40 years, where US policies are leading to capital outflow from it, of sorts per se. I feel that part of the story is now behind us. Okay. I mean, dollar has stabilized as tariffs have moved from rhetoric to reality. I mean, tariffs before the Liberation Day were at 3%. Post Liberation Day announced people thought it'll go to 30%. Then they were completely reversed and brought down to 10%, and now they are stabilizing probably around 17-18%. Okay. So I think the tariff related news flow, which was swinging capital flows, I think that is now behind us. ठीक है. Right? And that flow helped emerging markets play a catch up to India and reconcile our valuation gap. Here on, I think FII flows will be more a function of Fed. Okay. Fed policies. ठीक है. Because in an absence of earnings or in an absence of dollar weakening, the only third bastion of support is, you have interest rate cuts. Rate cuts, ठीक है. Now, rate cuts also, there are 2 or 3 parts to it. One part is the policy rate that Fed cuts. ठीक है.
And second part is how market rates or bond yields move, right? दोनों में थोड़ा आई हैव फाउंड सम डाइवर्जेंस. रेट कट सारी सरकार कर रही है, करेक्ट, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स नहीं गिर रही हैं. नहीं गिर रही है. ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज पोस्ट कोविड सारा का सारा डेट बर्डन सॉवरिन बैलेंस शीट्स में है. I mean, for example, US government debt to GDP is up 17% versus pre-COVID level. Wow. Which Okay. is a very meaningful jump. Now, in the initial part of the COVID, Fed did QE and absorbed it. ठीक है. उस सिनेरियो में बॉन्ड नीचे भी गई. मतलब अगर आपको याद होगा 1-1.5% तक US 10-year went. But उसके बाद 2022 से US गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी नीचे नहीं आया है. मतलब वो और एक ऊपर ही गया है. बट फेड ने क्यूटी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग मतलब बैलेंस शीट श्रिंकिंग स्टार्ट कर दिया. और उसके कारण क्या हुआ है कि लास्ट 2-3 साल में सप्लाई डिमांड का बहुत बड़ा मिसमैच है, which is कि यूएस गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी ऑन स्टॉक बेसिस is up 15% वर्सेस प्री कोविड. फेड बैलेंस शीट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी इज ऑलमोस्ट बैक टू प्री कोविड. तो ये एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स जो है मार्केट में आर बीइंग फोर्स्ड टू अब्सॉर्ब बाय प्राइवेट सेक्टर. इंटरेस्टिंग. तो इसीलिए इस सिनारियो में क्या हो रहा है कि फेड रेट कट्स के बाद भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है बॉन्ड यील्ड्स में. एंड दिस ट्रांसमिशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इक्विटी मार्केट्स देन द फेड रेट कट्स देमसेल्व्स. बिकॉज फेड रेट कट्स आर इवेंचुअली नोशनल नंबर. आई मीन द वे ट्रांसमिट फर्स्ट बॉन्ड मार्केट में होता है, फिर रियल इकोनॉमी एंड देन ऑब्वियसली इक्विटी वैल्यूएशंस में भी साथ में. So I think we are in a very unusual backdrop where rate cuts are happening but not transmitting bond deals. We have unusual backdrop. Second is that US trade deficit in the past, whenever it has narrowed, Fed has had an unambiguous choice of fighting only deflation. इस बार पहली बार ऐसा है कि दुनिया के लिए वीक ग्रोथ या डिफ्लेशन एनवायरमेंट है, बट यूएस के लिए इन्फ्लेशनरी है. एब्सोल्युटली. सो इससे भी फेड के हाथ थोड़े टाइट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यूएस का कोर सीपीआई इज अबाउट दैट टारगेट एंड यू आर हैविंग अ फ्रेश बाउट ऑफ इन्फ्लेशनरी शॉक व्हिच मे बी ओनली वन टाइम, बट है तो सही. इट्स रियल. यस, टिकर शॉक आने वाला है. या सो इस सिनेरियो में हाउ अग्रेसिव कैन फेड बी रिमेन्स टू बी सीन. बट इन आवर व्यू the more important variable to monitor is not just rate cuts, but whether Fed resorts to QE, and more importantly, how bond yields or how quickly bond yields move lower is what I would argue, Ajay. बट फिर मुझे बताओ, आई रेड योर रीसेंट रिपोर्ट्स ऑल्सो, कौन से सेक्टर्स में आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी है, नहीं है. एज एन इन्वेस्टर फिर मुझे कैसे सोचना चाहिए, वेयर डू आई गो? बिकॉज इवन व्हेन आई लुक एट बैंक नंबर्स, इनिशियल साइंस ऑफ थोड़ा क्रेडिट साइकिल की इश्यूज आ रही है, राइट? या करेक्ट. So now I think we are reaching at a different stage in the macro cycle. अच्छा. So typically macro cycle के 4 stages होते हैं, what we call, which is early cycle, mid cycle, late cycle, and downturn या slowdown. Okay. Now macro or sector calls are most important in early cycle or downturn. Okay. Which are basically earnings inflection points. Okay. And mid cycle में stock calls become very important, and late cycle में it's pure momentum. मतलब nicely put. Okay. Where you don't need to focus too much on fundamentals. Just marginal price जो ऊपर जा रहा है देखते रहो. वो और उस पे add up करते रहो. Okay, very nice. Okay. Right. Actually, someday we should do a podcast on this. Very interesting. Okay. Yeah. Right. Now today I feel that we are moving more decisively towards late cycle part. So where stock or sector calls become very critical. And over here, more importantly, to know whether markets are going to inflect or not, I think a good variable as an investor guide, I think it's one of my favorite indicators, is earnings yield minus bond yield. Beautiful. Which is a very good lead indicator if earnings are absent to know whether rates have fallen. In the past 3 downturns, markets had a sustainable bottom only after bond yields in US and India fell by 150 to 300 basis points. So from that standpoint, clearly caution is warranted. So from a market standpoint, caution is warranted. Now coming to sectoral, कि कौन से sector safe है, कौन से नहीं. So
सेक्टर्स जो सेफ होते हैं, आई थिंक टू डिसाइड ऑन की एंड डिमांड क्या है इज नॉट द राइट वे टू डू इट. ठीक है. I think the guiding force of sector selection should be one where policy stimulus at the margin is supportive. ठीक है. B versus the competitive intensity of that sector because slowdown is going to be omnipresent, right? हर जगह हर होगा. जगह होगा. C is the cyclicality of the sector and finally obviously valuations. Now ये तीन का मिक्स करके आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा. ठीक है. Now, amongst this, जो where we think that people can थोड़ा सा risk are incrementally building up versus past, I think is banks. क्योंकि banks अगर आप देखोगे typically तीन वेक्टर होते हैं which moves their profitability or shape the narrative. One is liquidity या loan deposit ratio. ठीक है. Second is credit growth itself. Third is your credit cost या NPA cycle जिसको बोलते हैं. Now, अगर आप देखोगे F23 was a purple patch for banks. मतलब जितना मेरी करियर में इट वाज वेरी रेयर ईयर जहाँ पे liquidity was ample, Yes. credit growth was accelerating and credit cost was falling. Yes. So it was a real dream year. But unfortunately, that did not last very long because in F24, the LDR concerns started to emerge. Yes. RBI started to do regulatory tightening and tightened liquidity as well. So the F24 narrative was hijacked by LDR or deposit growth being weak concerns. Correct. The result of the regulatory tightening was F25 credit growth slowed down. First credit growth, yes. Yeah, so credit growth had a big slowdown of sorts per se. The new RBI governor, I think, has done a lot of things right, where the liquidity or LDR concerns have been addressed. The regulatory tightening part of concerns also have been addressed. So as a result, I think from here on, I don't think liquidity is a worry at all. ठीक है. And neither is credit growth, which is stabilizing at 9-10%. ठीक है. Low, but stabilizing. It's not falling of sorts. Where I think the fresh round of worry is, the after effect of the tightening so far, which is on credit costs. Which obviously comes always with a lag. Always with a lag. So, हमारे framework में there's a 3-point checklist that we have drafted to know कि credit cost का concern meaningful या serious है या नहीं है. ठीक है. So, हमारे checklist में the 3 points are first, there should be aggressive lending in a pocket. मतलब loan growth should be aggressive and it should have probably come at the expense of, profitability of sorts. Okay. The second important point is loan growth should far outpace economic activity, which means ki somewhere, some of the loan is perhaps going in servicing the existing debt itself. And the third is the slowing of credit growth itself, because that is where, the debt servicing or the NPA concerns can resurface. Now let's take up each one of them. ठीक है. First on aggressive lending. Yes. अगर आप aggregate level पे देखोगे, credit growth of 10-11%, can you call it aggressive? I don't think so. No. I mean, it's not like 2000s decade जहाँ पे 25-30% credit growth था. System growth था. System growth था. So you could genuinely say कि हाँ excesses create हुए हैं. But there are pockets जहाँ पे excesses lending हुई है, right? And some of the pockets that we think are like consumption loans, जहाँ पे already credit cards or unsecured का stress, we have started to see. But I think also MSME space. अच्छा. So we put out a very interesting chart, Ajay, ki in last 4-5 years, the share of consumption loans and MSME loans, which are typically much more higher yielding than the corporate loans or mortgage loans, that share has gone up. Yes. But despite that, the banking sector spreads, basically the gap between yields on loans and yields on deposits, that has come down drastically. Wow. Which somewhere tells you that it has been aggressive lending. Now, they've given riskier loans at lower rates. At lower rates. Or at lower profitability. And lower profitability, yeah. Is the right word to say. Yes. Which is generally not a good sign, of sorts per se. So I think that shows that there has been pockets of aggressive lending per se. Right? Which is, I would say, the consumption and MSME space. Second, if you look at the gap between lending and activity, now obviously India we need to work with proxies because MSME ka data is not available. So some proxy that we use for MSME manufacturing is we take national accounts से पूरी India का manufacturing GDP. Okay.
उसमें से we remove the BSE 500 manufacturing GDP ठीक है. that we can compute, which is EBITDA plus wages. That is a manufacturing GDP of manufacturing company of BSE 500. The rest of them, they're not strictly MSMEs, but a broad proxy of how MSME will be faring. There we find very large gap between loans disbursement and MSME GDP. It's a very big K-shaped type. Same thing has happened on the consumption part, where consumption loans have grown at a brisk pace, consumption GDP not so much. And similarly for MSME services, a good proxy is trade services, there as where loans have outpaced activity. Now, I'm not saying some of the reasons why this has happened is shift from informal to formal. Some of it may probably be also a deeper penetration because these are not fully banked segments of sorts. But nonetheless, from a cyclical standpoint, this is not very comforting. So there are clearly excesses in retail and MSME. I mean, there are Data certainly some excesses of sorts per se. Now, whether these excesses and the scale of them, is it going to be very meaningful like what we saw in the corporate cycle? I don't think so at all. Okay. I mean, we are far from Sure. that level of pain or that level of, this thing. But where we do certainly think is that today credit cost at a systemic level is around roughly 0.5 to 0.4 to 0.5% of loans. ठीक है. I mean, just to put these numbers into perspective, the normalized run rate of credit cost is roughly 1% of loans. So even if we assume a normalized run rate of 0.4, 0.5 towards 1, which I think can certainly happen with the data points that we are seeing right now and with credit growth trying to slow down, that itself is good enough to weigh very meaningfully on banking profits. Banking sector profit growth has been in single digits for almost a year now. Yes. This is at a time where credit costs are at the bottom of the cycle. If credit costs rise, then their profit growth could be a very meaningful slip up. I mean, could move very meaningfully lower of sorts per se, Ajay. So then, see, banks, I clearly agree. आप जो कह रहे हैं वो हो रहा है. Initial signs, last 2 quarter के जो numbers मैं देखता हूँ, NBFCs included. Yeah. Credit costs और slippages बढ़ रहे हैं. Yes. तो फिर इंसान छुपे कहाँ? Yeah. आप पोर्टफोलियो मैनेजर अगर हैं, आप एक है या आप सब कुछ बेच सकते हैं, इसमें तो मैं आई कैन सिट ऑन 100% कैश. Correct. बट आमतौर पे इंसान वो नहीं कर रहा है. It's not advisable also. तो which are the remaining pockets of excellence? कहाँ पैसा डालें? Yeah. Right. Now the remaining pocket of excellence, let's look at the other parameters that are laid out for using it. One is where policy stimulus follow the policy stimulus. ठीक है. Second is, those where cyclicality is low. And third is where valuation comfort is high. Right? These three say we can create some combination and portfolio construct. Okay. Now, first, with regards to follow the policy stimulus, I think clearly consumption is, being incentivized. So I think certainly, being overweight on consumer is a must. Okay. In our portfolio as well, we are quite overweight on consumer, and I think that is almost cyclicality is also on the somewhat lower side, especially FMCG. Yeah. And there is stimulus coming. Second is another area of stimulus, I think, is cement, where GST cuts from 28 to 18 will, help either boost some pockets of rural demand or certainly, boost EBITDA per ton, of course, which has been on the lower side of sorts for the industry. Now, obviously, valuation comfort is not very high in cement, so that's a worrying sign. But nonetheless, policy support is there, so it is margin of safety. The third aspect is, where cash flows are very strong. And that's where I think telecom and internet companies become a good place to be in. Telecom companies, because, there is very little uncertainty on cash flows. And internet companies, I would say, are the real growth engines of sorts. Because there they're able to generate growth and move from one segment to the other. And it's now coming at a more, it is no longer coming at the expense of cost. It is more of a profitable growth that we are seeing now, and which is more sustainable of sorts. So that I think should be the growth part of your portfolio. Understood. Okay. And finally, the value part of the portfolio, which is a contra call that we've just taken, is upgrading IT. Where at least we think that with 4% dividend yield, relative valuations now at long-term average,
and potential support of INR depreciation, and given the 20% underperformance by TD, there could be a cyclical upside. yeah, there could be on a relative basis या again. relative basis, समझ गया बिल्कुल Yeah. बिल्कुल कि structurally दिक्कत है, हाँ, लेकिन short term में given high dividend yield, cheap valuation, yes, high cash flows and relative underperformance. yeah, and also relative earnings differential not being very yes, large. Yes. I think makes a case for some allocation to IT as well. Interesting. Per se, Ajay. तो थोड़ी मुश्किल है बाजार में, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, निकलेंगे कैसे हम इस गड्ढे में से? सो अजय, अगर आप देखो कि सारे पास्ट प्रॉब्लम, वेदर एनबीएफसी क्राइसिस हो इंडिया की, 2011 से 13 के प्रॉब्लम था 2008-9 के बाद से निकले थे, इवन 2000 में भी जब डॉट कॉम बबल बर्स्ट के बाद जब निकले थे, सारी रिकवरीज वर लेड बाय ग्लोबल. यस, and all of them happened after deep rate cuts and cheap valuations. So I think we will get there as well, at some stage of sorts. But I think there are two ways out. One is just the last एक सवा साल से we've been muddled through, where it's difficult to find actually a theme also which has properly played out, where we have every quarter some different theme narrative. बिल्कुल. Or there is one where there is a more sustainable surgery kind of a solution that comes through, where you have eventually a way out, a global demand engine, change in domestic policymakers where they move more towards prioritize growth more over macro stability, which is also very important. Yes. Per se. So I think when we get the second part of it, that is where I feel a sustained mega bull run will come through. Until then, you'll most likely remain muddled through, and if somewhere something goes awry, then a risk of drawdown also is there. But all crises eventually lead to a more sustainable long-term growth path per se, Ajay. So माई रीड जो आप कह रहे हैं बिटवीन द लाइंस इज, अगर मॉडल थ्रू रहे, पड़ा रहे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो देयर आर सीम्स टू बी मोर रिस्क ऑन द डाउन साइड. शॉर्ट टर्म, yeah, in the short term, yes. But long term, I think what is very good in this cycle versus past are corporate balance sheets. Yes. Which means कि जो scarring होती है कि एक बार डाउनटर्न में चले गए, आप बहुत टाइम तक रहते हो, वो नहीं रहेगा. जब इस बार जब डिमांड वापस आएगी, our ability to capitalize on the demand because balance sheets are very good, I think will be far better. So I think we have a lot of things done on the supply side, and we have a big growth runway ahead of us. It's just that the near term things seem a bit more dicey, and if one can manage those times well, then the path on the other side can be much better, is what I would argue, Ajay. चलो प्रतीक, एज यूजुअल बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच. माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए, प्यार है